हेलो दोस्तों, दिस इज़ अंकित करकेट्टा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोग देखोगे जशपुर से दनगरी वाटरफॉल ट्रिप के बारे में, जिसमें आपको नेचर व्यू, ऑफ रोडिंग, एडवेंचर ये सब देखने को मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा बना है तो दोस्तों वीडियो को लास्ट देखें और वीडियो पे बने रहें। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जहां हम जा रहे हैं दनगरी वाटरफॉल, उसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी ज़रूर दूंगा। ये जो दनगरी वाटरफॉल है छत्तीसगढ़ राज्य के जिला जशपुर के बगीचा ब्लॉक के दनगरी गांव में यह वाटरफॉल है, जिसे हम दनगरी वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। इस वाटरफॉल को आसपास के गांव वाले द्रावघाग और छिंगघाग भी कहते हैं। दनगरी वाटरफॉल जशपुर जिले से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दनगरी वाटरफॉल पहुंचने के लिए आप जशपुर से भी जा सकते हो और अंबिकापुर से भी आप जा सकते हो। जशपुर से दनगरी जाने के लिए 3 रूट हैं। इस वीडियो में हम जिस रूट से गए हैं वो जशपुर से होते हुए सन्ना, पंडरापाट, सुलेसा होते हुए दनगरी पहुंचे थे। इस रूट को हम लोगों ने इसलिए लिया था क्योंकि इस रूट पे बहुत ही अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो कि आप आगे वीडियो पे देखोगे। और दूसरा रूट जशपुर, आस्था, कुसमी, शंकरगढ़ होते हुए दनगरी जा सकते हो। दनगरी वाटरफॉल जाने के लिए पहले वाले रूट से आप जा सकते हो और वापस आने के लिए दूसरे वाले रूट से वापस आ सकते हो जशपुर। जैसे कि हमने इस ट्रिप पे ऐसे किया। और तीसरा रूट जशपुर, बगीचा, पंडरापाट, सुलेसा होते हुए दनगरी पहुँच सकते हैं। जशपुर से दनगरी वाटरफॉल जाने के लिए सबसे पहले आपको सन्ना पहुंचना पड़ेगा। ये जो प्लेस देख रहे हो वो सन्ना है। यहाँ से सीधे आगे कुछ किलोमीटर जाने के बाद आपको ऐसा रास्ता मिलेगा जहाँ आपको लेफ्ट पंडरपाट के लिए टर्न करना है। पंडरपाट से आगे निकलने पे आपको ऐसा चौराहा देखने को मिलेगा। यहाँ से आप सीधे भी जा सकते हो, लेकिन ये राइट में जो रास्ता है वो आपको सीधे सुलेसा पे भी निकालेगा। सुलेसा जाने के रास्ते में आपको ऐसे नज़ारे देखने को मिलेगा। इसी नज़ारे को देखने के लिए हम लोगों ने इस रूट से आए हैं। ऐसे प्राकृतिक दृश्य आप लोगों को बरसात के मौसम में या तो ठंड के मौसम में ही देखने को मिलेगा। ये जो प्लेस है वो है सुलेसा। आपको यहाँ से लेफ्ट टर्न करना पड़ेगा दनगरी के लिए। सुलेसा के बाद आपको कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपको पूरा ऑफ रोडिंग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग ऑफ रोडिंग को एंजॉय करो।
इस ऑफ रोडिंग में भी बहुत अच्छे प्राकृतिक दृश्य आप लोगों को देखने को मिलेगा।
hand in the darkness. Summer heat, bodies lay on the carpet. Eye to eye, glistening. No, I saw it. I saw it. You're golden, golden. Honestly, you know it. Me under the street light at the end, so I could show you. You're golden, golden. Honestly, you're glowing. Me under the mezzanine, just so that I could show you. You're golden. Hey, you're golden. You're golden. You're golden. Golden. You're golden. Yeah, you're golden. You know it. Yeah, you're golden. Golden. ये जो नदी दिख रहा है आपको, इसको पार करने के बाद दनगरी वाटरफॉल देखने को मिलेगा। So I could show you. Golden, golden. Honestly, you know it. Me under the me under the वाटरफॉल पहुंचने से पहले आपको कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेगा। बाकी आप वाटरफॉल के नज़ारे को एंजॉय करो। ये वाटरफॉल चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जैसे कि आप वीडियो पे देख रहे होंगे। यहाँ पहुँचने के बाद एक अलग ही फीलिंग मिलती है। ये हमारी एक फैमिली ट्रिप थी, जिसमें फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स थे। तो हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया इस दनगरी वाटरफॉल ट्रिप को।